प्लीज नहीं यार, मैं इतना टायर्ड हूँ, मुझे रेस्ट भी लेना है. आई थिंक आई गॉट फीवर ऑल्सो. मोनिशा, you have promised. क्यों प्रॉमिस किया? नेक्स्ट वीक पक्का. You're not gonna keep your words? हेलो, क्या इमोशनल ब्लैकमेल? तो इस मूवी का नाम है अ डेट. एंड टू बी ऑनेस्ट, आप इस मूवी से सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखोगे, इस मूवी से आपको एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, एक्चुअल मीनिंग ऑफ लव पता चलेगा. आपको इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप होगी. आप चीज़ों को, लाइफ को एज इट इज़ देखना सीख सकते हो इस मूवी से. इस मूवी से आपको दुनिया को, लोगों को देखने का एक अलग नज़रिया मिलेगा. Whenever you go to every state of this country, you feel you're in a different country, right? That's because every state is a country of its own. They have their own tradition, culture, and language. India has never been a single country before British. You know, you just have to come out of your home, your social media, your government, and look at this country as it is. Only then you'll understand how unique and beautiful this country is. You just have to respect the people and their choices. That's it. Respect. और इनफैक्ट इस मूवी को देखकर ही मेरे को पता चला था कि इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल लैंग्वेज. Why South Indians don't learn Hindi? Why should they learn that? Because Hindi is our national language. And who said that? Do you know Hindi? No. तो मैंने इस मूवी को आज से 1.5 साल पहले देखा था, जब मैं इंग्लिश सीख रहा था, और ये कमेंट भी किया था मैंने इस पे उस टाइम. इफ़ यू विल नॉट सी दिस वन, यू विल रियली मिस एन अमेजिंग थिंग. एंड आई स्टिल फील द सेम. इफ़ यू विल नॉट वॉच दिस मूवी, you will actually miss an opportunity to change your thinking and life. खैर, अब बात करते हैं इस मूवी की. तो मोनिशा और कार्तिक साथ में जॉब करते हैं और मोनिशा दिल्ली से आई हुई होती है बेंगलोर, और फिर इनका डिसाइड होता है एक डेट पे जाने का. और वो डेट नहीं जो हमारे दिमाग में आती है, अ सिंपल डेट, सिर्फ साथ में टाइम स्पेंड करना. Everything looked pretty normal. But I didn't know that this day, this single day is gonna change the course of my life. तो फिर उनकी डेट शुरू होती है और फिर नॉर्मली जो सब बातें होती है वो सारी बातें होती है, जैसे कि ये. Hey, have you seen DDLJ? That's my favorite childhood movie, you know? Didi, what? Oh my god! Have you not seen it? Haven't even heard of it. Seriously, man, you should go and die. Ask me to watch it, no, why are you asking me to die? No, just go and die. और फिर ऐसे ही बहुत सारी बातों में मोनिशा साउथ इंडियंस को डिसरिस्पेक्ट करती है. वो एक्चुअल में नहीं करती है, पर कार्तिक को ऐसा लगता है. तो फिर अपना कार्तिक मजाक में ही मोनिशा को रोस्ट करना शुरू करता है. जस्ट सी हाउ. What do you like the most in Bangalore? Nothing. Oh my god. Why so much traffic, man? Like, I don't understand how people are living here. Hello, people like you and me did this, okay? Immigrants. If we all go back to our hometown, Bangalore city would be neat, clean and sweet like before. Stop complaining on things that you are responsible for. और कार्तिक का रोस्ट बड़ा मस्त लगता है मेरे को, जैसे कि ये भी. And you remember few years back how in Australia so many Indians were beaten up because of the same reason? Well, that's what happens when you go to Australia and ask them to learn Hindi. They will beat the shit out of you. तो यही सब बातों की वजह से उनकी थोड़ी लड़ाई हो जाती है और फिर ये होता है. Right now I feel so much enmity with you that I don't want to continue this date anymore. Get lost. Even I don't want to be with a racist like you. And by the way, it was really crap knowing you. Goodbye. ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ. Did you just call me in the local language? No. Don't lie. That sounded like a really bad word. Little. That is why I hate Madrasis. You are the most annoying creature I've seen in my life. Hello. We will never learn Hindi, okay? Get lost. You get lost. बस फिर वो ऐसी जा रही होती है और उस टाइम बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात सोचती है. लिसन टू इट. We were not supposed to be together. It was not meant that way. That was visible in every single thing we tried. It's better to depart than to stay together and fight. पर फिर कुछ होता है और वो डेट कंटिन्यू होती है, और क्या होता है वो देखने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा. Come on, there are so many places to visit. It'll be fun. Trust me. You should not annoy me.
And you should not insult South. Deal. Truce. It was nothing short of a miracle that we got together again. We acknowledged our differences and agreed on the fact that we disagree on a lot of things. तो यहाँ से वो एक दूसरे को समझना शुरू करता है और कार्तिक बहुत समझदार बंदा है. उसका इस दुनिया को, चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है. Observe this. What is your problem in learning Hindi? Why are you guys saying no to it? See, I totally understand your concern. Really? Yeah. If you both start speaking in Hindi rather than English, you feel you're very close to me, right? Yeah, exactly. That's exactly what every localite wants to feel. Don't you get it? You go to a local shop, talk to that person in a local language. Don't speak fluently. Just talk in 2 or 3 words. Look how happy he feels and how he treats you back. That's how you earn their respect. However closer we get, these cultural differences keep popping up between us every now and then. How to make her understand. और फिर इसके बाद कार्तिक एक बहुत बढ़िया चीज़ करता है मोनिशा के साथ. Karthik, teach me few polite words in Kannada, no? Why do you want to know? Because I want to impress the local people. Really? Yeah. Okay. Whatever you want to say, add Ninaji before that. Ninaji. Exactly. If you wanted to be more polite, append Le with Ninaji. Le Ninaji. All the best. Enjoy. Le Ninaji. Innandu kudi. ಏನಂದಮ್ಮ Le Ninaji. Innandu kudi. ನಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮುಚ್ಚ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ. ಕೆಟ್ ಬಾಬು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಡ 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 ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ್ಯ. ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Teaching me all wrong words. Why do you do this, huh? Why do you do this? Monisha, do you listen. have any idea how those buffaloes have treated me? You do you... need to understand why I did that. Why, huh? You wanted to meet localites, right? Yeah, so? This is the way. But Monisha, not shirt. Monisha, stop hitting me. It's paining, yaar. Okay, stop it. Monisha, stop it. Monisha, stop it. और इस मूवी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नहीं बताई है क्योंकि मैं छोटे छोटे सस्पेंस नहीं ख़त्म करना चाहता. पर ये चीज़ें देख लो ताकि शायद थोड़ा सस्पेंस और बढ़ जाए. She made me say this. Wow, what a girl. One question was troubling me. Why would someone dump a girl like Monisha? What is it that a guy doesn't like in her? और जो मैंने बोला था शुरू में कि इस मूवी से आपको एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप समझ आएगा, तो आई थिंक दिस क्लिप कैन जस्टिफाई दोज वर्ड्स. Far, far away from my home. A stranger from a place I'd never visited. Speaks the language I'd never heard before. Follows a culture I never cared about. Becomes my friend. With whom I can share anything in this world and still not be judged. और इस मूवी से आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखोगे जो आपकी लाइफ में काम आएगी एक्चुअल में, जैसे कि ये. Do you know what is cognitive dissonance? Cognitive what? It happens when there is a disagreement between our heart and head. When this happens, our thoughts, beliefs, attitude will become inconsistent. I'm not getting you. Let's say I have a lot of talent and I have all the knowledge in this world and I deserve the best of best. But the job I do every day is shit. They treat me like shit and the salary I get is shit. But somewhere I get convinced myself that this is what I deserve. But the other part of me tells me that I deserve better. You know what happens now? I start fighting with myself every day. This fight will slowly destroy me, makes me go antisocial. Even makes me forget what I really love in my life. और ये भी. You know, you are just one decision away from a totally different life. And at the end, if you want to understand something deep in a relationship, understand this. Do you know what is the first sign of true love, Monisha? Treating your loved one with utmost respect, Monisha. Respect. The first sign of true love is treating your loved one with the utmost respect. तो अब लास्ट में क्या ही बोलूँ, क्योंकि इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश सो इट शुड नॉट मेक अ डिफरेंस कि हाउ द मूवी इज़, बिकॉज मूवीज़ आर नॉट गुड और बैड. मूवीज़ आर ऑलवेज गुड. इट इज़ जस्ट अबाउट आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. सो इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, गो फॉर इट, गिव इट अ चांस एट लीस्ट. क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत सारे नए वर्ड्स और सेंटेंस फ्रेमिंग सीखने को मिलेगी.
So go for it. Bye.